Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu News analysis, and today is 21st February 2023. So I will discuss the important news. So first news, US President जो बाइडेन ने एक सरप्राइज विजिट की है यूक्रेन की. This visit is in the before the first anniversary between the war of Russia and Ukraine. So that the war was started between India and Ukraine on 24 February 2022. Now, so basically it was a surprise visit of Joe Biden, but USA has made clear to the Moscow, means the capital of Russia, that the intention of USA's this visit of the president is not in relation to the war, so that to avoid any kind of confusion between the two nations. ठीक है, so ये उसकी सरप्राइज विजिट थी और ये एक पर्सनल मैटर में सरप्राइज विजिट थी, ना कि इन रिलेशन टू द वार. बट जो बाइडेन हैज सेड दैट यूएसए स्टैंड विद यूक्रेन, लेकिन he did not speak anything against Russia. Now the news is Waqf board moves High Court against center's decision to take over 123 properties. So we will understand this issue as well. So basically this Waqf board has various properties allotted to it, and the central government has made a decision to acquire its 123 properties. So this decision is taken by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Land and Development Office. So basically, as a general rule, the subject of land falls under the state list. जनरल रूल में लैंड का जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट लिस्ट में फॉल करता है. सो एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, देर आर 3 लिस्ट under the 7th schedule of Constitution of India, and 7th schedule of Constitution of India contains the provisions regarding the distribution of power between the center and state. Why this distribution of power? This distribution of power is in reference to the concept of federal structure. तो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड हो जाती हैं. So there are 3 lists in the 7th schedule of the Constitution of India, and the list 1 is the union list. It contains 100 subjects, and the parliament only has the power to enact the law on the given 100 subjects. Second list is the state list, जिसमें कि 61 subjects हैं और इन पर लॉ बनाने का राइट होता है स्टेट का. थर्ड लिस्ट इज concurrent list, on which both the center as well as the state, means the parliament or state legislature, both can enact the law. But now land is the subject of state list, but in Delhi, because Delhi is the national capital territory, so this issue of land or power of land lies with the central government. So central government has taken a decision to take the 123 properties of the वक्फ बोर्ड. बस केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज्यादा है, बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज है ये. नाउ dissolve EC, reconstitute it with elections. Uddhav. So basically there is a controversy. So we will not discuss the controversy. We will discuss only the technical aspect of this. So Shiv Sena is a political party constituted by बाला साहब लेट श्री बाला साहब ठाकरे जी. ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि उसमें शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन अब जो शिंदे है, आप लोगों ने थोड़ा दिन पहले देखा होगा, शिंदे फ्रैक्शन स्टोल एवरीथिंग. तो बेसिकली इट वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 groups. One group belongs to Shinde and other is to this Uddhav Thackeray. So earlier this party was formed by the father of Shri Uddhav Thackeray, means Shri Bala Saheb Thackeray जी, लेकिन शिंदे जी ने जो है अपने एक फ्रैक्शन को अलग कर दिया. Now the issue was that who has the right to use the symbol of this political party, and the name of this political party means the Shiv Sena. So election commission has given this right to Shinde factions. ठीक है, तो शिंदे ग्रुप को ये राइट इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, एंड दिस इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज दैट शिंदे फैक्शन इज द ओरिजिनल
Shiv Sena, means they belong to the original Shiv Sena. So if they belong to the original Shiv Sena, then they have the right to use the name of the party Shiv Sena as well as its symbol. So now Mr. Uddhav Thackeray has moved to Honorable Supreme Court. So let's wait what the Honorable Supreme Court say regarding this. So as per the contention of Mr. Uddhav Thackeray, the decision of Election Commission is not fair, or it is not in accordance to the law. Now we come to this slow progress to creating a safe workplace for women. So this is the most important news in today's newspaper. Slow progress to creating a safe workplace for women. We will discuss the historical aspect or the historical background of this concept, and then I will discuss the news in the editorial. Basically, there is Article 14 of the Constitution of India. So Article 14 says there shall be equality before law and equal protection of law. Means इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगी. मीन्स सारे लोग जो हैं कानून की नज़रों में समान होंगे एंड ऑल विल बी इक्वली एंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन गिवन बाय द लॉ. आर्टिकल 19(1)(g) of Constitution of India says that every citizen of India has the right to do any occupation or profession as per his or her own choice. Article 21 says that right to life and personal liberty is a fundamental right. So personal liberty means the liberty of a person to do any act, and this liberty include the internal liberty as well as the external physical liberty. Now there was a landmark judgment in this regard, and the name of the case of Vishaka versus State of Rajasthan. State of Rajasthan. So this was the judgment of Honorable Supreme Court in 1997. This judgment related to the sexual harassment of a woman at workplace. So in this case, a PIL was filed by Vishaka. Vishaka is an NGO. ये एक NGO है, किसी फीमेल का नाम नहीं है, ठीक है. So Vishaka is an NGO and it filed a PIL in Honorable Supreme Court regarding the prevention or prohibition of sexual harassment of a female at workplace. So Honorable Supreme Court in this case recognized that if any woman is sexually harassed at the workplace, then her fundamental right given under Article 14, 16, 19 and 21 are violated. मीन्स अगर किसी फीमेल के साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसका आर्टिकल 14 मीन्स जो राइट टू इक्वलिटी है उसको वो वायलेट होता है. ये वायलेट कैसे होता है? बिकॉज इट डज नॉट गिव द इक्वल प्रोटेक्शन टू द फीमेल एंड इट इज कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सिमिलरली उसका राइट आर्टिकल 16 में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो शी इज इक्वली एंटाइटल्ड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, and if she is not able to get the government job or if she is not able to do the government job because of this sexual harassment, then her right under Article 16 is violated. Similarly, Article 19 is violated because if she is not able to do the work of her choice or any occupation or profession of her choice, then her right under Article 19(1)(g) is also violated. Similarly, Article 21 is violated because the sexual harassment is done against the woman, so it is against her right to personal liberty. So Honorable Supreme Court in this case gave certain guidelines, और guidelines क्या थी कि कोई भी establishment जिसमें whether be it private or public means government or public private establishment means company or organization जिसमें 10 लोग काम करते हैं, वहां पर it is mandatory for the employer to constitute a sexual harassment committee. So this decision was given by Honorable Supreme Court in 1997. लेकिन we were not having the definition of sexual harassment till 2013. So 2013 में the definition of sexual harassment was incorporated into IPC under section 354A, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है. इससे पहले हमारे पास कोई सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन नहीं थी. सिमिलरली एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ
Sexual Harassment of a Woman at Workplace Act 2013. So there are two provisions in IPC. One is section 354A, and that defines the sexual harassment, and other is the section 509 that deals with the insult the modesty of a woman. ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी फीमेल को 30 सेकंड तक घूर के देखता है गलत इंटेंशन से, तो दैट पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी. नाउ सो ऑथर का कंसर्न यहाँ पर यह है कि जो वुमेन के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है और उसके लिए जो हम सेफ वर्क प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें प्रोग्रेस काफी स्लो हो रही है. और उन्होंने कहा कि द वुमेन्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड नॉट डायरेक्टली बट स्ट्रक्चरली. तो देखो इन्होंने कहा है वायलेंस इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज बोथ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल. अब हम थोड़ा इसको समझते हैं. अब जो स्ट्रक्चरल से इनका कंसर्न है, तो इनका कंसर्न स्ट्रक्चर से ये है कि दैट वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द वर्क प्लेस ऑन द डिफरेंट ग्राउंड्स. फर्स्ट ग्राउंड इन्होंने ये कहा है कि दैट सपोज दैट वुमेन आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो दे हैव द राइट टू बी इक्वली रिप्रेजेंटेड इन ऑल द डिपार्टमेंट, बट देयर कंसर्न इज दैट दे आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड. तो अब आप देखेंगे इन्होंने कुछ डेटा भी दिया हुआ है. तो इन्होंने कहा है कि the periodic labor force survey annual report available for 2020 and 21 shows that through the participation of women in the total labor force grew, labor force participation has gradually increased from 17.5% in 2017 to 25.1% 2020 to 21. means जो वोमेन है, जो फीमेल है, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी पॉपुलेशन तो 48% 49% है हमारे देश में, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन 2017 और 18 में ये था 17.5% और अब उनका पार्टिसिपेशन 2020 और 21 में है 25.1%. तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है. सेकेंडली जो फीमेल है उनका पार्टिसिपेशन कम है, so they are not able to raise their voice against the sexual harassment committed against them. तो suppose that according to the view of the author, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेल मेंबर हैं और 1 फीमेल मेंबर है, and if there are some allegations or acts of sexual harassment against that lady, so as per the view of the author, she does not raise her voice. अपनी वॉइस को वो रेज नहीं करती. and so ये उनका कंसर्न है. सिमिलरली दूसरी बात यह है कि our society is not agree to give the equal right to them as per the view of the author. Rather we consider that our society is patriarchal society. Patriarchal means पितृ प्रधान. ठीक है. तो यहाँ पर जो फीमेल है, they are considered as inferior. ठीक है. Now start early at the home. The absence of enabling and safe working environment is one of the factor. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट हो जाता है एज पर द व्यू ऑफ द ऑथर. ठीक है. अब घर से कैसे हो जाता है कि इफ देयर आर 2 children in a house, one is boy and other is girl, so it has been seen in many cases that the female or the girl child is not so favored or considered inferior in every aspect. For example, in case of education, so generally it has been seen that the female child will go to the government school and the male child will go to the private school. So as per the diet of the both are concerned, that girl child is given less nutrient diet and the boy child is given more nutrient diets. So these are some view regarding the author in the discrimination against the woman. Now the problems with the data protection bill. So government data protection bill लाने की कोशिश कर रही है. So there are some apprehensions of author in this regard, and the apprehensions are that, so first apprehension उनका ये है कि the bill seeks to dilute the provisions of RTI. So जो हमारे पास आज RTI है, so government is trying to dilute this. So RTI is an right now it is an statutory right, but it was
implied fundamental right before enactment of this right to information act. तो right to information act के enactment होने से पहले ये एक fundamental right था, implied fundamental right था, and it was so held by Honorable Supreme Court in the case of Information Broadcasting Ministry versus Cricket Association of West Bengal. So it flew from 19(1)(a) of the Constitution of India, and the 19(1)(a) of the Constitution of India gives right to speech and expressions. So that includes it. So ये कह रहा है कि in the data protection bill, if the data protection bill is passed in the existing form, it will dilute the provisions of the Right to Information Act, and because of this dilution, the various people of the country will not be able to take the various benefit of various scheme of the government. For example, that is the नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो आज की डेट में हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि दैट हाउ मेनी पीपल्स आर कवर्ड अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, और एनी अदर वी कैन आल्सो टेक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट ऑफ दिस इज एज ए जनरल रूल पार्लियामेंट हैज पावर टू एनेक्ट द लॉ, but in this case in the data protection bill, this power has been given to the executive. Means the parliament will only draft the structure of the act, means data protection bill, and it has given more power to the executive to draft the rule. So as per the apprehension of the author, if the more power is given to the executive against whom this bill is enforced or this act will be enforced, so it will be counterproductive. तो मीन्स अगर हम जिस पर्सन के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं उसको ही हमने एक्सेस पावर दे दी है. सो एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. सो इफ वी गिव मोर पावर और एब्सोल्यूट पावर टू ए पर्सन, then there are more chances of dictatorship in this regard. थर्ड क्या है, यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना जाएगा, एंड उसके जो अथॉरिटी जो सारे लोग अपॉइंट किए जाएंगे, दीज विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ द थर्ड एप्रीहेंशन इज दैट if the data protection authority will be constituted by the central government and all the person will be appointed by the central government, then central government may misuse its authority and those person who are responsible for the data protection will not be able to exercise their power freely. So this is the apprehension on the part of this. Secondly, इसमें जो फाइन का प्रोविजन है, although this data protection board has been given a power of civil court, और इसके पास पावर है 500 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया जा सकता है. सो दिस फाइन इम्पोजिंग पावर में आल्सो बी मिसयूज्ड. So suppose any person is raising any concern against the government, then the data protection board may impose a fine of 500 crore upon that person. So it will also be there are chances of misuse of power in this regard. Now can we use moon dust to slow down global warming? So यहाँ पर एक यूएस का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च स्कॉलर भी हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक अपना व्यू प्रेजेंट किया है, एंड अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द साइंटिस्ट कि अगर हम जो मून की डस्ट है दैट इज नॉन एरोसोल, उसको एटमॉस्फेयर में डालते हैं, ठीक है, मून से एक पर्टिकुलर पॉइंट से, सो इट विल हेल्प इन द स्लो डाउन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. बट देर आर एप्रीहेंशंस ऑफ दिस एज वेल कि अब यहाँ पर कुछ कंसर्न है कि पहला पॉइंट ये है कि अगर हम मून की जो डस्ट है उसको एटमॉस्फेयर में डालते हैं तो क्या ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगी या कितना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, देयर इज नो श्योरिटी इन दिस रिगार्ड. सेकंड पॉइंट ये है कि सपोज डस्ट ये तो एटमॉस्फेयर में डाली जाएगी, अब डस्ट का डालने का मेन पर्पज ये है कि इट विल डाइल्यूट द रेडिएशंस ऑफ द सन, ये सन की रेडिएशन को डाइल्यूट करेगी, जिससे क्या होगा कि जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो हमारी अर्थ पर नहीं आएंगी, ठीक है, जिससे जो गर्मी है वार्मिंग कम होगी. सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म और मेथड सजेस्टेड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट. बट इसमें बहुत सारे कंसर्न भी हैं, क्या कि अगर हम डस्ट को ऊपर से डालते हैं तो यहाँ पर इट में आल्सो अफेक्ट द नेचर एंड द पैटर्न ऑफ रेन इन द वर्ल्ड, ठीक है.
तो सपोज डस्ट यहाँ पर डाली एंड इफ इट अफेक्टेड द नेबरिंग कंट्री एंड देर इज नो रेन इन द नेबरिंग कंट्री, so it will affect that country. So now who will pay the compensation to that country for the loss of the rain? Secondly, how the amount of compensation will be decided? So this is only one of the suggestion. Now only parliament can amend the law to provide a uniform marriage age. So basically advocate Ashwani Upadhyay ji filed a petition in Honorable Supreme Court that Honorable Supreme Court should struck down the marriageable age of 18 years, that on the ground that it is arbitrary in nature. But Honorable Supreme Court said to the Ashwani Upadhyay ji that it is not the work of the Supreme Court to enact the law, rather it is the right of the Parliament to enact the law. तो उन्होंने कहा है कि if we will struck down this age, then ultimately what we can do? So we do not have the power to enact the law. So because of the doctrine of separation of power, there is a doctrine of separation of power under Article 50 of Constitution of India, and by virtue of that doctrine, सारे जो organs हैं, there are 3 organs in our country. One is the legislature, means parliament, तो parliament का काम है लॉ एनेक्ट करना. सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव, इसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना. एंड थर्ड इज द जुडिशरी विच punishes the person who violates the law. So Honorable Supreme Court said that it's not the duty or it's not the right of the Supreme Court to enact the law. Similarly, one of the most important aspect is that Supreme Court cannot issue the writ of mandamus to the Parliament or state legislature to enact a law. So Article 32 of Constitution of India that authorizes Honorable Supreme Court to issue 5 writs. One is habeas corpus, mandamus, and certiorari, prohibition, and quo warranto. So we will not go into the detail of all these writs. So writ of mandamus is issued when a public authority does not fulfill its function or does not perform its duties. So now question arises whether Honorable Supreme Court has power to direct Parliament or state legislature to enact the law on a particular subject. So answer is no. This is very important aspect, and this question is asked in your examination. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.